दोस्तों जय हिंद। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में कुदरत लोगों से नाराज चल रही है। बीते 3 दिनों से भारी बारिश से नदियां उफान पे हैं। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में आसमानी आफत से खतरा बढ़ गया है। लेकिन जिस वक्त खतरा बढ़ रहा था, जिस वक्त हालात बद से बदतर हो रहे थे, उसी वक्त असम राइफल ने वहां पर आकर मोर्चा संभाल लिया। असम राइफल और इंडियन आर्मी ने मिलकर लोगों का रेस्क्यू किया है। जहां जहां पानी बढ़ रहा था और जहां जहां लोग फंसे हुए थे, जिसकी जानकारी असम राइफल के जवानों को मिली, तो इंडियन आर्मी और असम राइफल ने मिलकर कई ऑपरेशंस चलाए और वहां से लोगों का रेस्क्यू किया है। जो जानकारी मिल पाई है, त्रिपुरा में ही 28 राहत शिविरों में 6000 लोगों को भेजा गया है। मणिपुर की बात कर लें, मिजोरम की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, हर जगह पर जो है असम राइफल ने आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। ये दिखाता है कि असम राइफल कानून व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट की सही करने में जहां अग्रणी है, एक अहम पहल निभाती है, वहीं संकट के वक्त वो अपने लोगों के साथ खड़ी भी होती है। Yesterday, the Assam Rifles along the Indian military has been working on the operation of rescuing the people as well as also in order to stop the water breaches that has been, or the river banks we have been seeing. So how far you have been able to succeed so far? So far, we have rescued approximately a strength of 1500 persons from Imphal East and West location. A total of 8 columns and 4 reserve columns are there, which are there deployed on ground and helping the people here. So after your observation during your operation, we wanted to know where are the severe locations where this more flooding, inundation of water is taking place? Actually, it is because of the various reasons that the bunds or the floods are taking place. But I want to tell you one thing, that this time the preparation were more robust and adequate preparation had been carried out. That's why the impact what the Imphal had seen in last year 2024, the condition was not that severe. So people are there on ground and they are seeking the assistance, and we are helping them on ground. And when we really look into the physical existence about these breaches that have been taking place, of the river banks, you see there is no immediate solution for the right doing for the time being, though hard effort is being in order to close that breach area. So how long may take this if you really believe? As the first effort of the force on ground is to rescue the people, subsequently we'll be carrying out the distribution of the relief material, in addition to distribution of the medical packages also, by conducting various medical camps in the affected area. Thirdly, we will also be helping the state administration in carrying out or closing these breaches on ground. There are 3 to 4 locations wherein these breaches have taken place, so they will be subsequently closed in coming days as the weather will improve.